Hello everyone, welcome back to yet another episode of Health Bar. So today we're going to be talking about post-COVID exercise. Without much delay, I would request Pooja Mehta ji to please conduct the morning prayer and we move on with our topic. Pooja ji is not here, Sonali ji is pitching. Okay. Over to Sonali ji. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Today is 3rd February 2022. Please fold your hands. Ya Devi Sarvabhuteshu Shanti Rupena Sanstita Namastasyai 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 Namo Nama Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Sanstita Namastasyai 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 Namo Nama Ya Devi Sarvabhuteshu Bhakti Rupena Sanstita Namastasyai 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 Namo Nama. Thank you, everyone. Have a lovely day. Thank you, ma'am. Thank you, Sonali ji, for that lovely prayer this morning. I'm going to start off with the topic. So, exercise has been a topic of discussion in the last few months and years, the last 1 or 2 years, because gyms or जहाँ पे भी हम workout करते हैं, usually those areas have been shut down. Exercise के बारे में and there's of course बहुत सारी information. We know that exercise helps us build our immunity, but again जो venues होते हैं हमारे exercise करने के, that has been shut out for us. So this has been quite problematic in the last few months. More than that, very important in talking of when we're talking about exercise in the COVID era, we have to consider starting exercise after you've had COVID or after you've taken the vaccine. So ये कब करना चाहिए and कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, we're going to be discussing that today. So I'll move on. Of course, there are a lot of benefits to your mind, and that's why we should do it. It slows cognitive decline. So जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, आपके जो cognitive functions हैं, जो आपके that help you to deal with daily life, even that those cognitive functions जो हैं वो आपके धीरे धीरे कम होते जाते हैं, and ये जो decline है, cognitive decline है, ये इसको slow कर सकता है exercise. It enhances your creativity, it improves your mental health and concentration, and also boosts your memory. So I'm not going to discuss all these details today. I'll do this at another time, maybe. In fact, I have discussed it earlier as well. But I'll mostly talk about post-COVID exercise and how to start exercise once we've had COVID. But this is an important slide in this presentation, and I want everyone to concentrate on. So there is this vicious cycle. Almost एक circle से आप कह सकते हैं, ये चलते रहता है if you are obese. So exercise करने से there is a very natural function that it prevents us from doing exercise. अगर हमारा वजन ज्यादा है या हम एक्सरसाइज कम करते हैं, उससे हमारा वजन बढ़ता है. अगर हम एक्सरसाइज कम करते हैं, देन वी आर अगेन हमारा वजन बढ़ता है. So this is a very vicious cycle. Let me discuss it. So here I am. If you can follow the mouse. So अगर हम डिप्रेशन से स्टार्ट करें, so डिप्रेशन अगर किसी को होता है, they have loss of interest and enjoyment. तो इसके वजह से वो ज्यादा कुछ एक्टिविटी करना नहीं चाहेंगे.
they'll be inactive most of the times, and there'll also be some diet changes that causes obesity. So we are here now. That causes obesity. जब obesity होती है तो आप जानते हैं CRP हमेशा obese लोगों में ज्यादा होता है, inflammation होता है. Because of the inflammation there is more depression. Okay. And also if you see, inflammation can cause pain or fatigue, and this can also cause depression, and then again depression will cause inactivity. So अगर आपका मन खराब रहता है, you are more likely to be obese. अगर आप obese हैं, you are more likely to be depressed. अगर आप depressed हैं, you're more likely to exercise less. If you are or if you are overweight and if you're obese, you're more likely to exercise less. Ye automatically this you get stuck in this cycle, and this is what we have to break through today, and we can incorporate exercise in our lives. So I'm going to skip all these technical details today, and we're just going to discuss when to start exercise in the post-COVID period. And further, I will request all of you to put down your questions in the chat box. We'll take some questions and then we'll take the session forward. So all of you know about this concept. मैं इस concept के बारे में बहुत बार कर चुकी हूँ. So there is this concept of hormesis. ये जो लाइन है, इसमें हम कोई भी चीज की मात्रा को बढ़ाते चलते हैं, whether it is exercise. So let's talk about exercise for now. हम एक्सरसाइज को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, there is a sweet spot that we reach of the benefit. जितना हम उसको गेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज बढ़ाते जाते हैं, we gain this amount of benefit. इसके बाद में अगर हम एक्सरसाइज बढ़ाते भी हैं तो हमें एक तो बेनिफिट हमारा कम होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपका एक्सरसाइज की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, देन यू आर रीचिंग अ हार्मफुल डोज. सो इन अदर वर्ड्स, जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है. सो इट दैट अप्लाइज टू एक्सरसाइज एज वेल. इट अप्लाइज टू एनी ऑफ द स्ट्रेसर्स. अगर आप इसको उस तरीके से देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन में यू कैन पुट एनी स्ट्रेसर. सो दिस कैन बी टी. अगर चाय की मात्रा भी हम अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम पिए, इट इज गुड फॉर अस. एंड अगर बियॉन्ड दैट इफ यू वांट टू ड्रिंक, देन इट कैन बी हार्मफुल एज वेल. ओके. सो इन फैक्ट इसको अगर आप हाइड्रेशन से भी अगर आप कंपेयर करें इस पर्टिकुलर ग्राफ को, एंड दैट इज द रीजन दैट आई एम डिस्कसिंग दिस टुडे, कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी चीज की अति जो है ये खराब है. सो इवन दैट हाइड्रेशन, अगर मैं आपसे बात करूं तो जितना हम कहते हैं 2 से 3 लीटर, प्रोबेबली दैट अप्लाइज हियर. उसके बियॉन्ड भी अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, हो सकता है नुकसान भी होने लगे. सो दिस इज what hormesis. Excuse me. So I'll just jump to my. So yes, this is what I want to talk about. Exercise tips before you get COVID. अगर आपको COVID अभी हाल में नहीं हुआ है, more than 3 months हो गए हैं, then I would suggest that you should be walking around as much as you can. आपको हर कुछ समय में, अगर आपको बैठने की आदत ज्यादा है, हर कुछ समय में आपको खड़ा होना चाहिए, एंड मे बी टेक अ स्मॉल टाइनी वॉक. वॉक एंड टॉक क्या है? दिस इज समथिंग दैट आई हैड सेड अर्लियर कि जब भी आपके फोन की घंटी बजे, वैसे आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि आई हैव टू गेट अप एंड I should talk. So immediately post COVID period में maybe it is not feasible to talk and walk at the same time, but yes, this is a good thing कि आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए. इसके अलावा आपके जो गोल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए. बहुत बड़े बड़े गोल्स आपको नहीं रखने चाहिए. That if you are starting off with your exercise, your goal should be very very small for the first day. And again, as I said, that you should and this is before we get COVID, you अगर आपने अभी तक exercise शुरू नहीं करी, if you're not doing any form of exercise, then I recommend that you start with just 5 minutes. सिर्फ 5 मिनट चलिए,
5 मिनट से फिर 7 मिनट बढ़ाइए, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, and then so on and so forth. So अगर आपको कोविड अभी हाल में नहीं हुआ है, then this is what you can do. अगर आपको कोविड हुआ है, if you are having COVID at the moment you should just rest. You can do some light breathing exercises and you can do the 6-minute walk test. इतना ही exercise आपको allowed है in the 15 days that we have COVID. तो उसमें आपको exercise बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. Post COVID period में, my first thing that I want you to know is start slow. On day 10 of mild COVID, you can start off with a little bit of your exercise. आप जो भी exercise करते थे पहले, उसका 15 to 20% maybe you can start off with mild COVID. The reason, अगर आपने ये show मेरा पहले देखा होगा, उसमें मैंने most likely exercise के लिए मैंने आपको इससे भी कम आपको exercise करने के लिए बोला था, but this time in this wave we have not seen much of pneumonia, and because as such recovery is much faster. So on day 10 you can very well start off with 15 to 20%, and on day 14 you can इसको आप धीरे धीरे 2 या 4% से बढ़ाते हुए you can do up till 30% of your usual exercise activities in the post COVID period. So मैंने बोला था start with your 10% of pre-COVID routine, so this can even go up. So अगर आप पहले 10 मिनट करते थे तो आप around 3 minutes से आपको start करना चाहिए. So if you were not used to exercise before, अगर आपने कभी भी पहले exercise नहीं किया, then you can just take a 5-minute walk and start with just that. And इसके अलावा breathing exercise and clock clearing exercises जो हैं, ये आप 1 महीने तक आप कर सकते हैं. Now we come to what kind of exercises should you do for any kind of help. So this is also another very very important slide. आपको दिन में अगर आप the calculation is that हफ्ते में आपको 150 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, एंड दिस इज इन द नॉन कोविड फेज. जब आपको कोविड नहीं हुआ है और यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, देन 150 मिनट्स पर वीक. और अगर आप हमारी कैलकुलेशन देखें तो 21 मिनट पर डे मॉडरेट एक्टिविटी आपको जरूर करनी चाहिए. एंड अगर आप बहुत विगरस एक्टिविटी करते हैं, देन यू कैन डू अप टू 75 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, मॉडरेट 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्टिविटी पर वीक. ठीक है, तो 150. सो लेट मी जस्ट बी हियर. So this is how it is. 150 minutes of moderate aerobic activity or 75 minutes of vigorous aerobic activity a week. So itna, this is the guideline that you need. This is for fitness. So remember कि अगर आपको वजन कम करना है या आपके goals कुछ और हैं, then you can increase this as well. So I think on that note, I would like to end the session. Of course, when we're talking about exercise, other than the aerobic exercises, strength training exercises are really, really important, and we should do that for a minimum of 2 times in a week. उसके beyond करने की जरूरत नहीं है, लेकिन strength training आपके लिए बहुत important है. Strength training will improve your sugar levels, it will improve your mood, and they are really, really important as well. So on this note, I would like to end the presentation today. I will take more of these slides in the coming days, but before that I would request all of you, if you have any questions, we can please talk about them, or if there are any questions in the chat box, we can discuss them. And if not, then we can end the show. So I think no questions in the chat box today. The first day that we restart the session, always there's a little slower response.
So I hope the response is better tomorrow. We'll see you again